हम लोग अगर वो उनका जान बचाने के लिए एक संघर्ष पे हैं ऐसा सोचे तो हम we have achieved nothing because the people are still dying and it is not just one or two, it is just within a 10 days I have seen almost like 6-7 people here are there. Bezwada Wilson, the founder of the Safai Karamchari Andolan, the man now famous for his 30-year-old battle to end manual scavenging in India and to prevent the death of sanitation workers, tells us nothing has changed. The death of a 48-year-old labourer Rishipal, who died of asphyxiation while cleaning a sewer near Delhi's LNJP hospital just last month on August 20th, was widely reported. Two of his colleagues, also found unconscious in the sewer, were lucky to survive. Just 8 days before the tragedy at LNJP hospital, there had been another. On August 12th, toxic gases killed two brothers who were cleaning a sewage tank at a mall in East Delhi. On August 6th, 3 labourers died of suffocation while cleaning a manhole in Delhi's Lajpat Nagar. A 4th labourer was admitted to hospital battling for his life after inhaling the poisonous gases. He survived but will have to live with acute respiratory problems for the rest of his life. दिनेश ठेकेदार ने इनको सफाई काम करने के लिए वो जो उपकरण होते हैं वो ऑक्सीजन मास्क सेफ्टी बेल्ट ये नहीं दी थी इन्होंने मना कर दिया था उन्होंने. The Lajpat Nagar tragedy followed just 3 weeks after another. On July 15th, 4 men died while cleaning a household septic tank in Khitorni in southwest Delhi. The post-mortem in each of these deaths was asphyxiation due to inhaling toxic gases inside sewer and septic tanks. Within a 35 days, it is in Delhi itself is the 10 deaths, national capital. So there is no end. And the numbers are day by day it is increasing. We can say that before the deaths are also not matters for anybody, so nobody counted. Now at least we started counting the deaths. That is the only achievement we can say. But we are unable to save even one life. The deaths in Delhi led to outrage. सेफ्टी टैंक में जो वो हादसा हो रहे हैं, जो मर जा रहे हैं, वो चीज़ की सरकार तक हम लोग का आवाज़ पहुँचे, वो ये चीज़ को बंद कर दे. We went to test their promise. This is what we found. Every day, a group of daily wage labourers sit under this tree in Rohini, northeast Delhi, waiting for work. From the Valmiki community, they have traditionally cleaned sewers and septic tanks. They had finished 2 assignments in the morning and were waiting for more. मैं छोटा सा था 12-13 साल का जब से ये काम कर रहा हूँ. पढ़ाई लिखाई करी और इसी काम में घुसा हूँ. मेरा बड़ा भाई मेरे को मैं आवारागर्दी करता था, उनने मेरे को ये काम सिखा दिया. मैं इस काम करता आ रहा हूँ जब से. आप क्या पहन के जाते हो? हम जी कुछ नहीं पहन के जाते, कच्चा पहन के जाते हैं अंदर हम. कोई आपके पास मास्क होता है? नहीं कुछ नहीं होता हमारे पास. उसको हम धो के गैस जब अंदर उतरते हैं सीवर के अंदर, जो बदबूना है महकना है. देखो ना, मैं आपको दिखाता हूँ. ये सब सीवर की मार है. नजर कमजोर हो जाती है, साफ नहीं दिखता. अब तो आप पास में बैठे हो तो दिख रहा है. थोड़ी दूर चले जाओगे तो अंधेरा बनाएगा. जांच नहीं कराई आँख की? नहीं कराई. तो आप लोग किसी सरकारी वगैरह मुश्किल है परमानेंट होना? नहीं कुछ नहीं जी. कभी कोशिश की आपने? कोशिश तो की थी लेकिन वगैरह वो नहीं लेते. किराए भाड़े से हम रह जाते थे. मेरी सब ड्यूटी लगी थी यहाँ पे फिल्मिस्तान कम्बेला, वहाँ सीवर सफा करके आ रहा हूँ मैं. वहाँ मैंने 1 साल सर्विस की है. वहाँ भी बुलाया, बस किराए के चक्कर में रह जाते थे वहाँ पे. वहाँ तो इतना गंद होता है मैडम, आप देखोगे ना आप भाग जाओगे वहाँ से. वहाँ पे खाल भैंसे के जो गंद होता है ना सब बहता है, ऐसे ही बहता है वहाँ पे. भैंसे कटती है वहाँ पे. वहाँ से गंद निकालना, हाथों से गंद निकालना, उसको दिन घुसना पानी के अंदर, खून के अंदर घुसना. कैसे कैसे काम करते हैं हम जानते हैं. A call comes to clean a series of sewers behind a badly planned urban settlement. As they get to work, little evidence of the new promised safety measures. Filth and fecal material choking the sewer produces toxic gases. The bubbles on the surface are its indication. Using bare hands and primitive implements, the workers keep trying to clear the waste. In this case, they were lucky, able to unclog the drains without entering the sewer.
In another neighborhood, the workers are called to clean a much deeper sewer line, choked by the recent rains. The men have to physically enter them like this. Again, no evidence of any new safety measures. दिक्कत तो मैम आती है Dilawar गंदगी Bhai is the group head. गैस की प्रॉब्लम होती है आंखों से कम दिखने लग जाता है अभी भी आंखें हमारी मतलब वीक हो जाती है आंखों के सामने उजाला सा आ जाता है क्योंकि जैसे ढक्कन खोलते हैं हमारे अंदर जाते हैं तो उसको जो भपका होता है ना उससे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है शरीर में इससे काफ़ी दिक्कतें आती हैं शरीर में टीबी बनने की भी आशंका रहती है अगर खुराक नहीं खाएं तो। आप लोगों का कभी परमानेंट जल बोर्ड के साथ काम को नौकरी नहीं मिलती इतनी आसानी से? नहीं वो काम कराते हैं प्राइवेट दे देते हैं हमें जल बोर्ड का काम करता हूँ मैं अभी भी कराया मैंने लेकिन वो ठेके पे देते हैं मैम ठेका दे देते हैं या दाढ़ी पर दे देते हैं परमानेंट नहीं कराते हैं। मैम वैसे राइट देखा जाए तो सरकार का ही काम है ये सरकार का ही हम काम करते हैं लेकिन वो तो अपना पल्ला झाड़ लेते हैं इसलिए कहते हैं और हमें मजबूरी के कारण काम करना पड़ता है। काम तो वैसे देखा जाए तो जल बोर्ड का होता है ही मैम लेकिन हमें थोड़ा वही दाढ़ी का लालच हो जाता है बच्चे पालने हैं इसलिए मैम हम पकड़ लेते हैं। This is the crux of the problem. The government evades all responsibility by outsourcing work to private contractors. In Delhi, 70% of the work is outsourced by Delhi Jal Board to private operators. When fatalities occur or workers are seen without protective gear, the government says it is not to blame, shifting the culpability to private contractors who are always found to be absconding. In other cities like Varanasi, for instance, the scenario is even more grim. Out of 630 municipal corporations across Uttar Pradesh, 5, including Varanasi, do not get any government funds. They rely entirely on income through city taxes. 100% of the sanitation work done here is through contractors who hire daily wage labourers. We came across this when investigating the death of Pintu, a sanitation worker in Varanasi. He was killed when bare-bodied he walked in to clean a sewage pipe. He was working for a company contracted by the Varanasi Municipal Corporation. मनोनी में सिविल लाइन में काम कर रहे थे सर और कब के जब गए वहाँ चौका घाट कब ठीक थाना के सामने मनोनी खोल रहे थे उसी जगह जब गए तो अंदर हिले ढक्कन हटा कर उसको 5 मिनट के बाद जब उनको निकाला गया तो ख़त्म हो चुके थे उसी जगह। The Jal Board, the nodal agency responsible for keeping sewers clean, had this to say. देखिए ऐसी घटना यदा कदा ही प्रकाश में आती हैं और मन तो ये घटना होती नहीं है। हम लोग जब किसी भी कर्मचारी को गहरे सिविल लाइन में उतारते हैं तो इस बात का पूरा ख्याल रखते हैं कि पहले तो गैस को चेक कर लिया जाए और गैस अगर है तो उसको पूरा से हटाने के बाद ही उसमें सुरक्षित तरीके से उसको बेल्ट और हेलमेट वगैरह पहना के उतारा जाए। अगर कोई दुर्घटना हुई भी है तो ये या तो कर्मचारी की लापरवाही हो सकती है कि उसको प्रोवाइड किया गया हो और उसने न पहना हो उस समय। Despite trying for over 2 weeks, it was impossible to locate the contractor who had hired Pintu. A year later, the police tells us the private contractor is still absconding and the case has been forgotten. Reporting on this story for the past 20 years, we've learned the hard way that promises for change simply don't amount to much. Way back in 2003 in Mumbai, I spent 2 days with workers from what's called the Conservancy Department of the Bombay Municipal Corporation, capturing their infernal working conditions. The guidelines on paper promise these workers protective gear, but the workers have never known any. In one unit, knowing the media crew was going to be present, workers were hurriedly given some protective equipment. The workers were so surprised to see it, they didn't even know how to use it. ड्रेनेज में काम जो करते हैं, ये भी ड्रेनेज में घास रहती है, इतना घास रहती है तो आदमी काम भी नहीं कर सकता है। उसके ऊपर उसको तेज करने का ये रहता है, कागज़ रहता है, कोई कंदिल रहता है तेज करने का। ये तेज करने के बाद फिर आदमी लोग नीचे उतरते हैं। तो ऐसा खोलने के टाइम कभी अंदर घास होएगा तो आदमी खत्म होता है। अभी ये चालू है, इसका मतलब ये अभी इसके अंदर गैस नहीं है, इसके अंदर हम उतर के काम कर सकते हैं। ये हमको डीएमसी ने डीएलएम मलम कर दिया, तो इसका डेट खत्म होने कब का है? ये पाँचवा महीने में 5। Along the policy of the corporation has been. Johnny Joseph, then the chief of the municipal corporation, first said there were no safety lapses. After seeing our evidence, promised change. In fact, for these conservancy staff, that is the sweepers, all along the policy of the corporation has been that one member from the family will be given employment in the BMC.
this has been there for a very long time, and it has been formalized after what is called the LAD committee report, which was in the early 70s. So traditionally we have been giving employment to one member of the family after retirement in case of the sweeper community. In the past 15 years, though, we've been back several times. On the streets of Mumbai, nothing has changed. See for yourself. अच्छा, ये बताइए कि आपको ऐसा जगह में काम करने में क्या तकलीफ होता है? मैला, ये सब मैले का पाइप फुटेला है। ये देखो, सब मैले का ही लाइन है। पाइप सब जगह फुटेला है, सब जगह। आप लोग कुछ बोलते नहीं हो किसी को कि ये इस तरह के काम हम कैसा कर सकते हैं, कैसा थोड़ा इसको ठीक नहीं कर सकते हैं? नहीं, लेकिन वो कुछ फायदा ही नहीं बोल के भी। जितना भी बोलते काम तुम लोग का है, तुम लोग ही करो, नहीं तो इन लोग दादागिरी करते।